Good morning students, welcome back to the class 11. Subject business study. Today we are going with the new chapter known as sources of business finance. As we have earlier completed our topic social responsibilities of business, we have completed our topic in that. Today we are going with the chapter number 7, sources of business finance. In this chapter we will study about the owners of the company, what is business finance, who are the investors, who are the lenders, who are the borrowers, and we will study about different tools which are being used for the purpose of earning capital. This kind of formats we will study in the chapter. Then we will see how they are used by the organization, at what rate they give interest, how they give dividend. We will study in detail one by one. Now in today's lecture we will study about what is business finance, and then we will see the finance categories, and then we will see the topic classification of sources funds. We will study in detail one by one. So let's begin with the topic known as business finance. What is business finance? Business finance is referred to the money required for carrying out the business activity. Business finance are those which are having a value of money which are being used for day-to-day transactions or to carry out the business activity. It is known as business finance. बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो बिजनेस में आप यूज करते हो और डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए आप इस्तेमाल करते हो, उसको कहते हैं बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस आर द सोर्सेस which are having a value which can be used to carry out business activities. It is considered as business finance. I have categorized 4 things over here. Because of business finance we can start our business and establish our business. अगर आपके पास पैसा होगा, आइडिया है, लॉजिक्स है, आपने मार्केट रिसर्च किया है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विद दिस बिजनेस फाइनेंस. नेक्स्ट पार्ट इज टू रन डे टू डे एक्टिविटी. डे टू डे एक्टिविटी में क्या होता है, हर रोज एक नया खर्चा आता है. नया खर्चा इन द सेंस you have to purchase raw material, you have to purchase machinery. Machinery is one time, but in day to day you have to purchase raw materials, then you have to hire labor on daily basis, you have to pay salaries to them, then you can go for a new expenses related to that particular products. Some different kind of alternatives are also being used. You have to invest the money in that. This kind of day to day activity money requires funds. That funds is also considered as business finance. Third point is to modernize, expand and diversify the business. To modernize means you have to upgrade your technology according to the market. अगर मार्केट में नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं और आप अगर आउटडेटेड मशीनरीज का इस्तेमाल करते हो तो बिजनेस स्टैब्लिश हो तो जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा. तो एट रेगुलर इंटरवल आपको मॉडर्नाइज होते रहना है. यू हैव टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजीज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव टू गो फॉर एक्सपेंशन. दिस मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स मनी. Now in expansion, once you have started your one outlet, then you go for second outlet, third outlet, fourth outlet, then you become famous in that particular state and then you can expand to national level. This kind of expansions also requires money. Now diversification is nothing but it is a concept of having different products. It requires also money. Best example, HUL. Hindustan Unilever has more than 850 plus products in India as a seller who sells day to day product. Next part is purchase to assets. To purchase assets, the money is required. Purchase of assets is for one time, for 5 years or 6 years. He can or she can use it in organization. Once he or she thinks that this organization requires certain new assets, then they can purchase. They require money.
So it is clear that business finance is nothing but a money required to carry out business activities. In business activities, there are four categories. One category is to start the business and establish the business, then to run day-to-day activity, to modernize, expansion and diversification of business, and to purchase assets. Purchase assets includes machineries, vehicles, transportation, then everything which is considered for the organizational benefits, it is required in purchase assets. Now, we are going into the next topic known as finance. As you know that finance is related to money, but finance is also been divided into two categories. One is fixed capital, another is working capital. As we have studied about running to day-to-day activity, to run day-to-day activity, it is also considered as working capital. So let's go with that fixed capital. Fixed capital. Here it has been mentioned fixed capital. In fixed capital, here the money is invested for the long period of time. Long period of time means you have to purchase an asset, you have to purchase a machinery, buildings, lands, whatever is required for the business. It has a value for long period of time. आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट जरूर करते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ओपन फायर में तो नहीं होगा या ओपन एनवायरनमेंट में तो नहीं होगा। तो आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए एक तरह का फिक्स एसेट्स है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स के लिए नहीं है। इट विल टेक एंड इट विल गो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितना ज़्यादा आप बिजनेस करोगे उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड होता जाएगा। तो प्रोडक्शन एरिया जो है वो आपके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स एसेट्स, उसके बाद मशीनरीज, उसके बाद में व्हीकल्स। एक बार आपने ले लिया तो 3, 4, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ अ वैल्यू ऑफ n number of times till the business exists. जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता रहेगा। We are talking about working capital. Working capital is nothing but the funds which are required to day-to-day activity. Funds are for day-to-day activity. It requires money for day-to-day transactions. Here it is been very much clearly written over here. It varies according to the requirement. Working capital की needs जो है वो according to situation देख के ही ups and downs होती हैं। तो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन पे वर्क ऑन करता है, whereas फिक्स कैपिटल जो है वो सिचुएशन पे इम्पैक्ट नहीं करता है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया मतलब उसके लिए आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज मैंने की। फाइनेंस has been divided into two parts. One is fixed, another is working capital. Fixed is for long term, whereas working capital is day-to-day transaction. Fixed assets, once you have purchased, it does not require day-to-day purchasing. It requires only maintenance. Whereas working capital, it is according to the needs of that particular organization. Working capital is varied. That's it. We have completed our finance concept also. If you have any doubt related to business finance or finance capital, fixed capital or working capital, just comment back. I'll reply as soon as possible. Now we are going with the third topic. The third topic is classification of sources of funds. This category has been divided into 3 parts. I have made a huge explanation also, but you have to understand the classifications of sources of fund. The first classification is period based, second classification is ownership based, and third classification is generation based. These 3 categories are being applied in organizations to understand the concept of sources of funds. From where you can generate the funds is considered as source of funds. Now, in periodic base we have 3 categories: long term, middle term, short term. In long term, we can consider that the money which are being
सोर्स ऑफ फंड इज फॉर मोर देन 5 years। ऐसी चीजें जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं वो मोर देन 5 years के ऊपर होंगे, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के अंदर इट एग्जिस्ट मोर देन 5 year। उसके लिए हम दे सकते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट्स लेकर आए तो उसको रखने वाले तो हो नहीं, आप उसको इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करोगे और वो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट जब आप मार्केट में बेचोगे तो वहाँ से आपको फंड्स रेज होंगे। उसके बाद में आप शेयर्स की बात करते हो तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, तो शेयर्स जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर एज डिबेंचर्स भी आप ले सकते हो। डिबेंचर्स इज ऑल्सो बीइंग इश्यूड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स। तो यहाँ पर हम इस कैटेगरी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बट यहाँ पे ये समझना है कि इट विल टेक मोर देन 5 years, इट इज कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म सोर्स। नाउ वी आर इनटू द नेक्स्ट पार्ट नोन एज मिडल टर्म या मीडियम टर्म। मीडियम टर्म इज नथिंग बट the amount of the source which are being used more than 1 year but less than 5 years. It is considered as medium source. It can be as public deposits. Public deposits मतलब शेयर मार्केट में पैसा डाला, उसका इस्तेमाल किया, 1 साल तक उसको यूज किया और 1 साल के बाद में उसको रिटर्न बैक कर दिया, या फिर 5 years से पहले उसको रिटर्न बैक कर दिया। इसको कह सकते हैं मिडिल टर्म सोर्स। लास्ट पार्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्स फंड। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या होता है? द मनी विच आर बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज लेस देन 1 year। 1 साल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स का मेन मकसद ये है कि आप उधारी पे प्रोडक्ट परचेज करते हो, रॉ मटेरियल मीन्स यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। You produce that product into finished goods and sell out in the market, and the money which is received by the organization, it has been given to the trade creditor who had given you a credit. This is the periodic based concept in a short form to understand. Whereas when we come into the ownership phase, in ownership phase we are having 2 categories. One is owner's fund, another is borrowed funds. Both are different but both are essential for the business. It gives a balance between the organization. There should not be too much owner's fund, there should not be borrowing funds. It should be a balance for making an organization smooth run. You should make a balance in the organization. Let's talk about owner's fund. What is owner's fund? The owner's funds is nothing but the money which are being invested by the shareholder for the long period of time. It is considered as owner's fund. These owner funds are permanent funds. जब तक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होती तब तक ये फंड्स फिक्स होते हैं और ये उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे ही होते हैं। और जो भी इस ओनर फंड्स को परचेज करता है लाइक इक्विटी शेयर, अगर वो उसको परचेज कर रहा है तो उसको हम कंसीडर करते हैं शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो राइट टू अकाउंट चेक कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं वो अल्टीमेटली ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर कही गई है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। वन इज परमानेंट फंड्स, अनदर इज राइट टू कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट, ओनर्स ऑफ इट्स शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर। जो भी शेयर परचेज करता है एज एन इक्विटी शेयर, दे आर कंसीडर्ड एज शेयर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स भी 2 कैटेगरी में, शॉर्ट एंड लॉन्ग, बट ये टेम्पररी है। टेम्पररी इन द सेंस आपको इन दी एंड आपको पे तो करना ही है। तो ये टेम्पररी लोन मैंने इसमें लिखा है। It has to be paid after specific period of time along with the interest which has been fixed by the organization. ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरेस्ट फिक्स करती है, यहाँ पे इंटरेस्ट आप पे करते हो। बोरोड फंड्स के अंदर आप इंटरेस्ट पे करते हो, वेयरएज ओनर्स फंड के अंदर डिविडेंड आता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि ओनर्स फंड में इंटरेस्ट लोग लिखते हैं और बोरोड फंड्स के अंदर डिविडेंड। यहाँ पे क्लियरली कह दूँ, ओनर्स फंड को जो भी प्रॉफिट मिलता है उसमें से
आपको डिविडेंड देता है, वेयरएज बोरोड फंड्स के अंदर आप इंटरेस्ट पे करते हो। दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पे आप रेगुलरली पे करते हो आफ्टर 1 ईयर, वेयरएज यहाँ पे 1 ईयर के अंदर अगर नुकसान हो रहा है या लॉसेस हो रहा है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होता है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन फीस। अब जनरेशन फीस के अंदर दो कैटेगरी है, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स you have to give benefits or you have to take benefits from the shareholders. शेयर को हम बेनिफिट्स दे सकते हैं या शेयर होल्डर से बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल जनरेशन या इंटरनल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर को ऐसा कह सकते हैं कि मनी की रिक्वायरमेंट है, आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो बाय इश्यूइंग सर्टेन शेयर्स, और शेयर की वैल्यू भी गिरा सकते हैं। तो इस बेस पे आप इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वेयरएज एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आप इंटरनल शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, whatever you want to sell, whatever you have to issue, it has to be issued directly in the market outside organization. बोनस आप देते हो तो इंटरनल सोर्सेज को बेनिफिट्स होता है, वेयरएज एक्सटर्नल को नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देता हूँ कि शेयर जो होते हैं, शेयर्स और डिबेंचर, ये दो चीजें जो है ये जब रीइश्यू होती है, रीइश्यू की सेंस ऑलरेडी ओनर्स फंड आ गया है, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी रोटेट कर रही है, लेकिन अचानक से उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये मनी जो है वो शेयर एंड डिबेंचर से इश्यू कर सकते हैं। तो ये शेयर एंड डिबेंचर जो है वो सबसे पहले इंटरनल होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। अगर वो परचेज नहीं करते हैं, वो परमिशन दे देते हैं, तो फिर हम एक्सटर्नल सोर्सेज में जा सकते हैं। नॉर्मली इसमें होता क्या है कि इसमें नॉर्मली जो ट्रस्टेड वर्दी पर्सन है उनके पास पहले अप्रोच किया जाता है। हाँ, अगर वो परचेज कर लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर परचेज नहीं करते हैं और ऑप्शन मिलता है तो फिर हम एक्सटर्नल सोर्स पे जाते हैं एज एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। Hope so you have understood what is the classification of sources of fund. In today's video we have carried introduction part, then we have seen the finance category, and then we have seen classification of sources of funds. In next video we will carry forward with one by one topic as owners fund. In owners fund we will have a different shares. We will discuss in detail one by one. That's it for today. Thank you.